अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीम हमारी हर हाल में जारी। इस मकसद के तहत सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल नागरजुना नगर नांदेड़ के ऑनलाइन तर्ज तालीम में प्यारे बच्चों, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जनाते फैशन मजमून इंग्लिश, इसमें आज हम 3.3 इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन, इसके सवाल के जवाब देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, गेस द मीनिंग ऑफ अमेजिंग सेलिब्रेटेड क्रैकर्स पेपर lantern of first amazing, very surprising. Second is celebrated, enjoyed a special event. Crackers, small fireworks that explode with a loud noise. Paper lantern, a lantern made of paper. List the important points from each paragraph of the letter. Answer a paragraph first. Celebration of eco-friendly Ganesh Utsav in America. Paragraph 2. Planning of eco-friendly Diwali without crackers and enjoying traditional snacks. Paragraph 3 है preparation of paper lantern and making a model of Fort Raigad. Paragraph 4. Invitation to cousin to come to India. Paragraph 5. Celebration of Thanksgiving and Halloween in the US. Paragraph 6 है regards and love. Question number 3. List the festivals we celebrate any 5 and the important parts of their celebration. तो यहाँ पर एक गणेश उत्सव और होली की मिसाल दी हुई है। इसी तरह आपको आपके त्यौहार के बारे में 5 सेंटेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द फॉलोइंग। ए है विच फेस्टिवल्स डू वी सेलिब्रेट on a large scale. Answer, we celebrate Diwali, Ganesh Utsav, Holi, Dasehra and Makar Sankranti on large scales. We also celebrate Eid ul Fitr, Eid ul Adha. Question number B है choose any one festival and decide which parts of the festival are eco-friendly and which are not eco-friendly. Diwali, eco-friendly parts, traditional snacks, earthen lamps, drawing rangoli with organic colors, wearing new clothes and worship and greetings. Not eco-friendly parts, use of crackers and fireworks, use of plastic bags, lot of use of electricity for decoration. C है what can we do to celebrate festivals in an eco-friendly way? Answer, create awareness, avoid use of plastic bags, use natural resources like food, water and electricity carefully, etc. Question number 6 है think of modern festival and new ways of celebrating it. For example, a reading festival. How to celebrate it in a new way? Arrange reading for fun and knowledge programs. Collect good books for reading. Read loudly poems, stories, travelogues, biographies, etc. are their parts before students, pupil stress on the importance of reading. Exhibit good and variety of books, magazines, etc. Encourage mobile library. Diet Day Festival, Healthcare Festival, Clean Village Festival, Farmers Day Festival. उसके बाद सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। We are dash a beautiful paper lantern at home. We are going to make. I am dash a model of Fort Raigad. I am going to make. Note that the phrases we are going to, I am going to show future plans. Complete the following sentences meaningfully. Our teacher is going to. Answer है retire soon. My father is going to bring a car. My grandmother is going to tell a story. उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर एक लेटर दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। डेट है 10 दिसंबर 2020। प्लेस है कोल्हापुर। इसकी शुरुआत की गई है माय डियर रमेश, हाय हेलो, थैंक्स फॉर योर लेटर। I received your letter. It was nice to know that you have won the
inter-class cricket final. Please tell me about the exciting moments of the match. We are planning to visit an orphanage here. We are also going to give the orphans new clothes and sweets. You know my friends Pritam and Vaibhavi, they are going to join my computer class. When you come here, we will visit some interesting places in Kolhapur. How are Kaka and Kaki? Give me regards to them and love to Chotu and Bubbly. Yours lovingly, Sandeep. प्यारे बच्चों, इस तरह हमने यहाँ पर इको फ्रेंडली सेलिब्रेशंस के हमने यहाँ पर सवालात के जवाब देखे। प्यारे बच्चों, इनको अपने फिर कापियों में लिखिए और इसे मुकम्मल कीजिए और मदरसे पर आते वक्त उसको मुकम्मल कर कर लेकर आइए। प्यारे बच्चों, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर फ़ायदा उठाइए। हमारे वीडियोस को देखकर फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी इसको देखने के लिए कहिए। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।